the vocabulary related to puja and temple and Yes. all these things. Do you Yes. remember that? Do you Yeah. remember that? Yes. Yes. Okay, I will give you Hindi words and Mm-hmm. try to tell me the English equivalent word for that. Today Yes. is a vocabulary session related to Navratri. Yeah. Everything will be in English. Yes. I'll Yes. tell you the Hindi word and you should tell me the English corresponding word in English. Okay, the first Yeah. word is Shubha Muhurt, Special occasion. auspicious occasion. Auspicious occasion. Note Auspicious. down. You should put it on your channel. No, Shubha Muhurt. Every day you have Shubha Muhurt. When you are going for a wedding function, marriages, and for anything, you have a Shubha Muhurt. Auspicious. Auspicious time. Okay? Yeah. And you offer mantra. You whisper mantra. When you are doing some puja, Mm-hmm. these are mantra. What do you call mantra in English? Mantra in English. Special puja, fire, you are offering fire, something, so the priest will come to that. That person will be offering, whispering some mantras. It's called as incantations. Incantation. Incantations. Incantation. Every day there will be bhajans. Jai Om Hari Dom Devi Mataji. Bhajans. What do you call bhajan in English? Bhajans. Hmm. Bhajans. Hymn, Mm-hmm. Hymn. You heard that, right? Yes, yes. In Bible, this word I learned. Hymn, H-Y. Hymn, N is silent. Ah. Astha. Yes. What is Astha? Your strong Salvation. belief in God is faith. Faith. Faith, आस्था is faith. ये भक्त को क्या बोलते हैं? आप तो हनुमान जी का भक्त है. Devotee. डिवोटी, यू गॉट इट. Devotee. ओके. और ये भगवान का जो डेटी है, डेटी का हेड पे एक मुकुट रखता है हम. Mm-hmm. मुकुट को व्हाट यू कॉल इन इंग्लिश? मुकुट. Crown. राजा रख, क्राउन. यस, मोस्ट ऑफ द वर्ड्स अच्छा, तो मंदिर का अंदर के अंदर एक छोटा सा रूम रखता है. Mm-hmm. उसको क्या बोलते हैं? जिसके अंदर डेटी को रखा जाता है. जो डेटी है, Mm-hmm. सैंक्टम सैंक्टोरियम. Spelling. SANCTUM, S-A. SANCTORIUM, सैंक्टम सैंक्टोरियम. हम मंदिर में जाते हैं, आप पहले बाहर घूमते हैं, then you go inside, and when you go inside and closer to the deity, there will be another place, and inside there will be place where the deity is kept, and all these pujas and hymns Mm-hmm. and incantations are done, and this milk abhishek, ghee abhishek, everything done on that. So Mm-hmm. that small area is called as sanctum sanctorium. Mm-hmm. Okay. Okay. So वो जो स्टैचू है जिनमें पूजा हो रहा है, उसको क्या बोलता है? What do you call that? Deity. DT. Deity. It is deity. DT. Deity, not deity. It is deity. DT. Okay. DT. Yeah. तो दूसरा भी शब्द आप सुना होगा, आइडल. Idol. आइडल. आइडल एंड डीटी में डिफरेंस क्या होता है? डीटी जो है बाहर आप कुछ भी रखो, अब आपका माने घर में भी आप पूजा करो, ये मंदिर का अंदर जो रखता है उसको डीटी बोलते हैं. Mm-hmm. अदरवाइज वी कॉल इट एज आइडल. ओके. तो भगवान श्री कृष्ण के हाथ में एक चक्र रहता है ना, सुदर्शन चक्र. उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? डिस्कस. डिस्कस. DISCUS. Not the other discussion. We will discuss it later, not that discuss. This is DISCUS. Discuss. Okay. और लॉर्ड महाविष्णु के हाथ में एक शंख रखता है. शंख. उसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में? See, we have to know all these words. Now you are English student. So we call it as conch. Conch in British English, and in American English we call conch.
CONCH. CONCH. Oh, मस्जिद को क्या बोलते हैं? मस्जिद, mask. Mask. मॉस्क. ओके. और माँ काली के हाथ में एक त्रिशूल रखता है. त्रिशूल, Mm-hmm. इसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में? त्रिशूल को. व्हाट यू कॉल त्रिशूल इन इंग्लिश? ट्रिडेंट. ट्रिडेंट. शूल, त्रिशूल को बोलते हैं ट्रिडेंट. TRIDENT. Mm. भगवान श्री कृष्ण का हाथ में बांसुरी रखते हैं. बांसुरी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? Flute. फ्लूट. Flute. और हम मंदिर जाते हैं, एक राख लगा देते हैं इधर. राख है ना? Mm-hmm. आप भी लगा हुआ Mm-hmm. है. व्हाट यू कॉल दैट? राख. एश. Mm. होली Ash. एश. ओके. Mm. गंगा जल को क्या बोलते हैं? व्हाट यू कॉल गंगा जल? Right. Holy water. Holy water. And some people they take upvas. What do you call that? Upvas. Fast. Nariyal. Coconut. Tulsi. Mint. Tulsi. Basil leaves. Basil. Basil leaves. Yes. Basil leaves. पान की पत्ता देते हैं ना? पान की Um. पत्ता. अरे. Betel leaves. Bit. और ये पुजारी जो है एक पवित्र धागा लगाते हैं. पवित्र धागा, उसको क्या बोलते हैं? What do you call that? Sacred thread. Sacred thread. चंदन की लकड़ी. सैंडलवुड. सैंडलवुड. कलश. हाँ, कलश. एक ऐसा एक बर्तन लगाते हैं ना, कलश. उसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में? अर्न. URN. अर्न. धूपबत्ती. धूपबत्ती को क्या बोलते हैं? जो धूपबत्ती लगाते हैं ना, what do you call that? Incense stickers. Incense sticks. Incense sticks. Okay. कर्पूर को क्या बोलते हैं? हाँ, that white color. कर्पूर. Camphor. Camphor. मक्खन. मक्खन. बटर. मक्खन लगाता है कभी कभी. मक्खन. ओके. घी को क्या बोलते हैं? घी को घी. घी बोलते हैं. और clarified butter बोलते हैं. We can call as a money. You make butter like a ghee from butter, right? Clarified butter. Or you can call, okay, दिया को क्या बोलते हैं? जो जला. earthen लैम्प बोलते हैं, या लैम्प, लाइट को लैम्प बोलते हैं. वो जो आप जलाते हैं ना, उसको क्या बोलते हैं? हैं? अभी आई एम सिटिंग हियर. सो व्हाट यू कॉल दिस वन? दिस वन. दिस में बोलते हैं कॉटन विक. कॉटन विक. पूजा करना. वर्शिप. वर्शिप. ओके. पुजारी को. प्रीस्ट. सिंदूर को. प्रीस्ट. एंड दिस सिंदूर को. राख को ऐश बोलते हैं. सिंदूर को बोलते हैं वर्मिलियन. वर्मिलियन. हनुमान जी का गधा को क्या बोलते हैं? मेस. MACE. मेस. These are all related to worship, temple, puja, everything. Yeah. You garland the deity with cotton wicks, offer bananas and nariyal. Yeah. Now, sometimes you put small pieces of nariyal, right? In some food. What do you call that? Small pieces of nariyal. Or sometimes we call it as grated coconut, right? Grated. आपको चटनी बनाना है, डोसा के साथ सांबार एंड चटनी बनाने के लिए you take grated coconut. Yeah. And then mix it in the grinder or mixer. Grated coconut. Yeah. And if you put some time in some of the, like, you make kheer, pudding, you make small pieces of coconut. It's called a sliver.
Dice. Dice is big pieces. Okay. Sliver means small pieces. Sliver of coconut. Okay. Mm-hmm. I hope you learn many words today. Try Yes. to use that. Try to use that. Make a Mm. video of all this, like puja. Actually, yesterday when I was doing means going to do the to perform the puja, so I thought that means I should keep all the things and make the English video of that. But I had Wonderful. not Now you that got it. much You of time. see, yeah, that means you are thinking very seriously. A strong desire, a burning desire to make that such videos. And Yes. we didn't talk about this, but I thought like it's a Navratri day, and I should Yes. teach you some related vocabulary and the story. Yes. So your homework is tomorrow. You should tell me this Durga Puja story, Durga Ma and Slow Mahishasura story. story. Okay. Mm, yeah. So all these, nothing, no religion is related in this. Mm, Nothing. I yes. just want you to speak English. Whether Yeah. you talk salutation, sun salutation, or Navratri, or Ramazan, or Christmas, Yeah. regardless of what the topic is, my ultimate aim is you to talk in English. Yeah. Perfect English. Fluent English.